Hello, all the students. Welcome to XAT, and today we are going to take three wonderful sets of business decision making for XAT. So today is 27th of December, and students XAT is approaching very fast. And 21 questions of XAT, business decision making. So that plays a very important role. And scoring high and business decision making is very much possible also. So we have taken a few sessions already, and today we are going to take the next one in the same series. And thank you very much for the wonderful comments and the kind of feedback which you people are giving. We people are really indebted for that. Yes, you keep studying with us and try to get the best score in the various exams. So students, after that, we are going to start with the series for CMAT as well. And moreover, let me make one more announcement. Very soon, we are going to start with a batch for GDPI as well. I urge all the students to become the part of that particular batch of GDPI. If people expect to get a call from any B school of India, let it be the Ivy League B schools or the average ones, but please ensure that you get yourself enrolled for this particular course. I will be your mentor, and we are going to have a lot of fun there. You will get an opportunity to learn a lot of things about yourself, the possible questions which are actually asked in an interview, how we need to give the answers to those questions, how to handle the counter questions, how to handle any kind of situation in an interview, and moreover, when we people don't know what is the answer, how to say a no. A lot of things we are going to study and we are going to learn how to handle an interview. So students, ये बैच हमारा स्टार्ट होने ही वाला है. Yes, you people get registered for that. We will have live sessions जो कि XAT application पर चलेगा. And students, terrific response we people are getting for CAT 2025 course also. A good number of students across India are joining this particular program as well. So thank you for this terrific response, and all the students. I know you people will be taking XAT this year, but in case if you have got any junior, any cousin, brother, sister who want to enroll for CAT 2025, just tell them to install XAT application once, go through the course, and the name of the course is Mission IIM Possible. So students, it's a wonderful program for CAT 2025. Nationally, one of the best content we people are providing. So please ensure that you become a part of that as well, in case if you're looking for CAT 2025. Chaliye, so all the students, after making these announcements, now it is time to start with the session on business decision making. I strongly believe that this is one such area where you people can have fantastic accuracy. I see so many students often getting confused in getting the answers and giving the answers of decision making. But believe me, students, once you understand how you people have to think, it's all about understanding the thought process. And to understand the thought process and to ensure that we people get the correct answers, this 5-point approach I have been discussing with you people. तो हमेशा रूट कॉज पर ध्यान दो, बैलेंस्ड अप्रोच, ग्रेटर गुड पर हमें चलना है, एथिक्स एंड वैल्यूज को हमें अपहोल्ड करना है, एंड फाइनली स्टूडेंट्स, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले थिंक क्रिटिकली, थिंक अबाउट द पॉसिबल demerits first. चलिए, without wasting time, we are going to start with the first set. Yes, this becomes the first set, and on the basis of that, on the basis of this particular data, you will have 4 questions. चलिए, so all the students, I'm giving you some time to go through this particular data. चलिए, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं, एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, so that I come to know कि कौन कौन जुड़ चुका है. एंड जो भी स्टूडेंट्स इसको बाद में वीडियो फॉर्मेट में देखेंगे, प्लीज इंश्योर दैट यू पीपल पॉज इट, गो थ्रू द डेटा वंस थरोली. एंड अगर डेटा छोटा हो तो मेरा सजेशन है कि आप 2 बार उस डेटा को पढ़ें बिफोर यू स्टार्ट गिविंग द करेक्ट आंसर्स. ओके, चलिए, ऑल द स्टूडेंट्स begin now. Yes, hi Raghav. Yes. चलो, इस डेटा को स्टूडेंट्स मैं आपके साथ पढ़ना स्टार्ट करता हूं, सो दैट हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा. एक बार डेटा को अपन समझकर देन वी विल कम ऑन द क्वेश्चंस. Now you people see, Mr. Rajiv Singhal, chairman of the board of directors of Loha India Limited, a steel manufacturing company, had just been visited by
several other directors of the company. Okay, तो चेयरमैन से डायरेक्टर्स ने मीटिंग की and the directors were upset with recent actions of the company president, Mr. Ganesh Thakur. So you people try to understand, Rajiv Singhal तो chairman है, Ganesh Thakur president है, and the directors were not happy with the president. They demanded that the board consider firing the president. Mr. Thakur, recently appointed president, had undertaken to solve some of the management employees' problems by dealing directly with the individuals as often as possible. The company did not have a history of strikes or any other form of collective action and was considered to have a good work culture. However, Mr. Thakur felt that by dealing directly with individuals, he could portray the management's concern for the employees. Okay? Point समझ में आया? The company did not have a history of strikes or any other form of collective action and was considered to have a good work culture. किसी भी डेटा में जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस है ना उसको अच्छी तरह से समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो पॉइंट यहाँ पर मेंशन्ड है कि कंपनी में जनरली कभी स्ट्राइक नहीं होती है एंड मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में बहुत ही कॉर्डियल रिलेशंस हैं. इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करना इज इम्पॉर्टेंट इफ यू रियली वांट टू गेट द एक्यूरेट आंसर्स. कई बार मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट जब किसी डेटा को सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं, हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को ओवरलुक करते हैं एंड हियर इज वेयर वी कमिट अ मिस्टेक. हर पॉइंट को ध्यान से देखो और उसमें से जो की पॉइंट्स है उसे अंडरलाइन करो, उसे स्टूडेंट्स अलग से नोट करते हुए चलें. नाउ कमिंग ऑन. यस, हाय लक्षिका. चलो, एक बहुत अच्छा सेट अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं. एवरीवन आर जॉइनिंग द सेशन नाउ. An important initiative of Mr. Thakur was to negotiate wages of the supervisors with each supervisor. In these negotiation meetings, he would not involve anyone else, including the personnel department that reported to him, so as to take unbiased decisions. After the negotiation, a wage contract would be drawn up for each supervisor. Thus, he felt would recognize and reward the better performers. अब स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, जनरली किसी भी कंपनी में होता क्या है, पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, वो सुपरवाइजर से बात करेगा, वेजेस को फाइनलाइज करेगा. पर यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो हर सुपरवाइजर से पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं और वेजेस को फाइनल कर रहे हैं. हालांकि मिस्टर ठाकुर का जो इंटेंशन है वो गलत नहीं है, बट ना तो वो पर्सनल डिपार्टमेंट को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं एंड ही हिमसेल्फ इज टेकिंग ऑल द मीटिंग्स एंड फाइनलाइजिंग द वेजेस विद ईच एंड एवरी सुपरवाइजर सेपरेटली. ओके, now see, Mr. Thakur successfully implemented the process for most of the supervisors except those working in the night shift. For them, he had drawn up the contracts unilaterally, benchmarking the wages of supervisors of the night with that of the supervisors of the day shift. Point समझ में आया स्टूडेंट्स? तो दिन में जो सुपरवाइजर्स काम कर रहे थे उनके साथ तो मिस्टर ठाकुर ने मीटिंग कर ली और वेजेस को फाइनलाइज कर लिया. On the basis of that, on the basis of those meetings, considering the benchmark of the supervisors who were working in the day shift, तो जो नाइट शिफ्ट के सुपरवाइजर्स हैं उनके भी कॉन्ट्रैक्ट्स को यूनिलैटरली मिस्टर ठाकुर ने फाइनलाइज कर लिया. तो यू पीपल अंडरस्टैंड, दिन वाले सुपरवाइजर्स के साथ तो मीटिंग हो चुकी है, बट नाइट वाले जो सुपरवाइजर्स हैं उनके साथ कोई मीटिंग नहीं. एंड फाइनली यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स वर मेड बाय मिस्टर ठाकुर. तो नेचुरली स्टूडेंट्स जो नाइट शिफ्ट में काम करने वाले सुपरवाइजर्स हैं, अब क्या उनका ग्रीवेंस तो रहेगा ही रहेगा. एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स डे शिफ्ट वाले सुपरवाइजर्स को बेंचमार्क मानते हुए नाइट शिफ्ट के सुपरवाइजर्स को डील करना बिना उनकी बात को सुने तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने वाली है. तो एनीवे स्टूडेंट्स, लेट अस सी व्हाट हैज टू बी डन. ओके दीप्ति, वेलकम. चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. फॉर सेवरल डेज रामलाल, a night shift supervisor, had been trying to seek an appointment with Mr. Thakur about his wages. He was disgruntled not only over his failure to see the president, but also over the lack of discussions about his wage contract prior to it being affected. Okay. As a family man with 6 dependents, he felt his weekly wage should be higher than granted to him. Last Thursday afternoon, Ramlal stopped by the president's office and tried to see him. Mr. Thakur's secretary refused his request on the grounds that Mr. Thakur was busy. Infuriated, Ramlal stormed into the president's office and confronted the startled Mr. Thakur
with his demands for a better wage. So Mr. Thakur stood up and told Ramlal to get out of his office and express his grievance through official channels. Ramlal took a swing at the president, who in turn punched Ramlal on the jaw and knocked him unconscious. तो सोचो स्टूडेंट्स बात कहाँ तक बढ़ गई. ओके, तो रामलाल प्रेसिडेंट के ऑफिस में चला गया और वहां पर दोनों के बीच में हाथापाई भी हो गई. आप सोचो स्टूडेंट्स, इसके बेसिस पर यू विल हैव सम क्वेश्चंस. द बेस्ट पार्ट विद दिस पर्टिकुलर डेटा इज, बहुत ज़्यादा टेक्निकल इसमें कुछ नहीं है. तो आई गेस स्टूडेंट्स एक बार भी अपन पढ़ेंगे तो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट दिस डेटा इज टॉकिंग अबाउट. बट नाउ व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ द क्वेश्चंस, वी नीड टू वेट फॉर दैट. The data seems to be okay, but now let us see the questions. Okay, चलिए, तो coming on students, the first question now. Yes, there will be 4 questions based on this data. So this becomes the first question. Now you people give the answer to the first question. Start. अब मैं चाहता हूं जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं फटाफट आंसर्स देना स्टार्ट करें. यस, हाय ऋषिकेश. चलिए, जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं, कम ऑन, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव द आंसर. हाँ, जिन बच्चों ने अभी जस्ट लाइव ज्वाइन किया है, यू विल हैव टू वेट फॉर सम टाइम. मैं ऑलरेडी इसका जो सेट है वो डिस्कस कर चुका हूं, तो वी आर गोइंग टू टेक द क्वेश्चंस नाउ. द सिचुएशन विद मिस्टर लाल कुड हैव बीन अवॉइडेड इफ मिस्टर ठाकुर हैड. So 4 points are given to us, and students, the question is, the option that best arranges the above managerial interventions in decreasing order of organizational impact is. Try to understand, it's a beautiful question. तो ये जो question है ये बहुत ज़्यादा direct नहीं understand. So there are 4 points given to us. Okay, और आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा managerial intervention in decreasing order of organizational impact. इसका मतलब है स्टूडेंट्स वो पर्टिकुलर ऑप्शन जिसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता से लेकर कम होते हुए. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको बताना है कौन सा पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता, कौन सा कम इंपॉर्टेंट होता. तो चलिए स्टूडेंट्स, यू पीपल हैव टू डिसाइड द ऑर्डर. एंड ज़ात में ऐसे क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस होते हैं. तो ज़ात में डिसीजन मेकिंग कोई बहुत डायरेक्ट नहीं होता. अंडरस्टैंड, यू विल जनरली सी दैट द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पैटर्न. Yes, come on. What will be the answer? इन चारों में से स्टूडेंट्स कौन सा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है? आप तो ऐसा पता करो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है. ओके, और अगर वो पॉइंट होता तो डेफिनेटली मिस्टर लाल और मिस्टर ठाकुर के बीच में जो हुआ उसे अवॉइड किया जा सकता था. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यू फाइंड आउट दैट. और वैसे भी स्टूडेंट्स, व्हेन वी कंपेयर द 5 ऑप्शंस व्हिच आर गिवन टू अस, फर्स्ट इज 4 इन मैक्सिमम केसेस, एंड फिफ्थ वाले ऑप्शन में सेकेंड बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. तो चलो, लक्षिका हैज गिवन द आंसर. कम ऑन, बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्या लगता है विच इज द बेस्ट आंसर हियर? यस यस यस. चलो, I'll tell you which is the correct answer here. Shall I? Okay, सभी ऑप्शंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला ऑप्शन है डेलीगेटेड द टास्क ऑफ नेगोशिएशन ऑफ वेज कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर नाइट शिफ्ट एम्प्लॉइज टू पर्सनल डिपार्टमेंट. कि आप ये जो टास्क है उसे डेलीगेट कर देते, पर्सनल डिपार्टमेंट को सौंप देते, तो पॉसिबली इस तरह का कन्फ्रंटेशन नहीं होता. कमिंग ऑन द सेकेंड वन, क्रिएटेड अ प्रोसेस फॉर सुपरवाइजर्स वर्किंग created a process for supervisors working the night shift so that they could have had an opportunity to interact with him. The student second option कहता है कि कोई सिस्टम बना लेते हैं, तो नाइट शिफ्ट में जो काम करने वाले सुपरवाइजर्स हैं उनके साथ भी कोई मीटिंग हो जाती है, कोई सिस्टम बना लेते हैं. अगर ठाकुर नहीं मिल पाए तो कोई और मिल लेता. ओके, तो स्टूडेंट सेकेंड ऑप्शन कहता है कि अगर ऐसा कुछ होता, नाइट शिफ्ट के सुपरवाइजर्स की बात को अगर सुना जाता, तो पॉसिबली ये जो कुछ भी हुआ है उसको अवॉइड करना was possible. Third कहता है created an open door policy that would have allowed employees to see him without any appointment. मुझे लगता है स्टूडेंट जो थर्ड ऑप्शन है क्या वो सुटेबल होगा? What you people think? ये ओपन डोर पॉलिसी है, भाई कोई भी एम्प्लॉय आकर मिल सकता है.
और अगर इस तरह का होता तो पॉसिबली इस तरह की कन्फ्रंटेशन नहीं हो पाता। प्रॉब्लम क्या थी कि रामलाल वांटेड टू मीट, लेकिन मिस्टर ठाकुर से मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो उनका जो ऑफिस है प्रेसिडेंट का, वो अलाउ ही नहीं कर रहे थे, एंड दैट इज द रीजन मिस्टर रामलाल को इस तरह का स्टेप उठाना पड़ा और सीधे आपके ठाकुर के कैबिन में उसको घुसना पड़ा। दैट इज द पॉइंट। तो क्रिएटेड एन ओपन डोर पॉलिसी। एंड फोर्थ कहता है पोस्टपोन द डिसीजन ऑफ वेज रिवीजन फॉर सुपरवाइजर्स इन द नाइट शिफ्ट फॉर 2 months since supervisors were rotated on different shifts after every 2 months। तो ये कहना स्टूडेंट्स की जो नाइट शिफ्ट के सुपरवाइजर्स हैं उनका जो वेजेस का रिवीजन था, इस डिसीजन को 2 महीने पोस्टपोन कर देते हैं, क्योंकि 2 महीने के बाद ये नाइट शिफ्ट वाले जो सुपरवाइजर्स हैं वो मॉर्निंग में आ जाएंगे, आज डे शिफ्ट में आ जाएंगे, और उसके बाद उनसे मीटिंग करके ये वुड हैव फाइनलाइज्ड। मुझे लगता है स्टूडेंट जो फोर्थ ऑप्शन है ना, वो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट्स डे शिफ्ट के सुपरवाइजर्स की सैलरी को रिवाइज कर रहे हो तो नेचुरली जो नाइट शिफ्ट के सुपरवाइजर्स हैं दे विल ऑल्सो एक्सपेक्ट द सेम थिंग। अब उन्हें कहना कि हम आपसे 2 महीने बाद बात करेंगे, पॉसिबली उससे जो ग्रीवेंस है वो कम नहीं होगा, वो इनफैक्ट और बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है स्टूडेंट ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, ये सबसे वीक है, ओके, ये सबसे आई वुड से लीस्ट इंपॉर्टेंट, एंड हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो जब मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है तो जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके, उसे मुझे सबसे लास्ट में रखना है। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स अगर मैं सब ऑप्शंस को कंपेयर करूं तो फिफ्थ सीम्स टू बी द बेस्ट आंसर। एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स अगर मैं फिफ्थ ऑप्शन को कंसीडर भी करता हूं तो 2 से स्टार्ट करने में देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर मैं 2 से स्टार्ट करता हूं, क्रिएटेड अ प्रोसेस फॉर सुपरवाइजर्स वर्किंग द नाइट शिफ्ट so that they could have had an opportunity to interact with him। बिल्कुल ठीक है, अगर आप कोई प्रोसेस बना लेते हैं और सुपरवाइजर्स आपसे इंटरैक्ट कर पाते तो ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आती। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता अगर सेकंड हो जाता है, तो सेकंड बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फोर्थ बिकम्स द लीस्ट इंपॉर्टेंट। फोर्थ किसी भी तरह से नाइट शिफ्ट के सुपरवाइजर्स के ग्रीवेंस को कम नहीं करता, 2 महीने तक पोस्टपोन कर दो, तो दैट इज नॉट सुटेबल। एनीवे स्टूडेंट्स, अगर अपन हर पॉइंट को लेकर ऑर्डर फिक्स ना भी करें, द मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि 2 से स्टार्ट करने में देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल एंड 4 पर एंड करने में भी देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई थिंक द जॉब इज डन। So students, fifth option becomes the best answer. Okay? ये सारे ऑप्शन में फोर्थ है ऋषिकेश, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर वी सपोज टू डू। हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। ओके, तो इन चारों में से जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज द फोर्थ वन। जिन भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ सेलेक्ट करना है, नॉट एट ऑल, बेटा 4 ऑप्शन हैं, चारों सेलेक्टेड हैं, लेकिन हमें ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये सबसे ज़्यादा टिपिकल होते हैं बिजनेस डिसीजन मेकिंग में। इनमें करेक्ट आंसर निकालना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है बिकॉज ऑर्डर थोड़ा भी आगे पीछे हुआ। अच्छा, दिस क्वेश्चन वॉज नॉट सो टफ बिकॉज मैक्सिमम ऑप्शंस वर स्टार्टिंग विथ फोर्थ ओनली। तो जैसे ही पता चला कि फोर्थ तो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने स्टूडेंट स्ट्रेट अवे फिफ्थ ऑप्शन को मार्क कर दिया। तो एनीवे, जैसे ही पता चला कि फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो तो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो तो स्टार्टिंग में तो आ ही नहीं सकता, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो दैट इज द रीजन फिफ्थ इज द आंसर। ओके, चलिए ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी, कुड यू अंडरस्टैंड दिस? द करेक्ट आंसर इज फिफ्थ। तो लक्षिका, शिल्पा, जिन बच्चों के आंसर्स अभी भी गलत हैं, दैट मीन्स यू पीपल आर स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ अप्रोच विच इज नीडेड टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। आज जिन बच्चों ने ऑलरेडी हमारी 3-4 क्लासेस को अटेंड कर लिया है, मुझे लगता है स्टूडेंट्स अब इस क्लास में तो आपकी एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव होनी चाहिए। तो इन टोटल मैं आपके साथ 10 क्वेश्चंस आज डिस्कस करूंगा। तो मैं चाहता हूं स्टूडेंट्स आप लोग नोट करते हुए चलना, कितने आंसर्स करेक्ट और कितने रॉन्ग। एटलीस्ट 80% एक्यूरेसी हमें अटेन करनी है। चलिए, कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2। Yes, another very interesting question. Question number 2. I want all the students give the answer. Be fast. Yes. और जितने भी स्टूडेंट्स लाइव ज्वाइन करो ना, आप कोशिश करें कि पूरी क्लास को एज इट इज अटेंड करें। ओके, आप लोग डिसाइड कर लो, अगर लाइव आना है तो लाइव में ही चलो। अच्छा, लाइव में इट्स ऑलवेज बेटर, एक तो आप स्टिक हो जाते हो। मैं जानता हूं कि जो बच्चे बाद में वीडियो फॉर्मेट में देखते हैं और देन वो अपनी स्पीड को मैनेज कर सकते हैं, दिस दैट, बट फिर भी मुझे लगता है कि डिसीजन मेकिंग में डोंट बी इन अ हरी, टेक योर ओन टाइम टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट डिस्कशन। यस प्लीज।
Chalo, which is the best answer here? So apart from the supervisors working in the night shift, executives of which department will have the most justified reasons to be disgruntled with Mr. Thakur's initiative? तो स्टूडेंट समझ में आया क्वेश्चन कि नाइट शिफ्ट के सुपरवाइजर्स तो डिससेटिस्फाइड है ही, लेकिन इनके अलावा इन 5 डिपार्टमेंट्स में से कौन से डिपार्टमेंट के जो मेंबर्स हैं दे विल बी मोर लाइकली टू बी डिससेटिस्फाइड विद मिस्टर ठाकुर? यस बताओ स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, फैंटास्टिक। ओके लक्षिका, कम ऑन रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। Yes, yes, yes. So apart from the supervisors working in the night shift, executives of which department will have the most justified reasons to be disgruntled? चलो कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, वन बाय वन अपन समझना स्टार्ट करते हैं। अब सोचो स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर नॉट बीइंग कंसल्टेड रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ द सुपरवाइजर्स ऑन द शॉप फ्लोर। मुझे लगता है जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एब्सोल्युटली दिस डिपार्टमेंट विल बी डिससेटिस्फाइड विद मिस्टर ठाकुर, क्योंकि मिस्टर ठाकुर ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से तो पूछा ही नहीं कि सुपरवाइजर्स का बिहेवियर कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है। तो विदाउट टेकिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल, मिस्टर ठाकुर ने डायरेक्टली सुपरवाइजर्स के साथ मीटिंग की एंड वेजेस को फाइनलाइज कर दिया। तो पॉसिबली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल बी डिससेटिस्फाइड फॉर सच इग्नोरेंस। ओके, फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर नॉट taken into confidence regarding the financial consequences of the wage contracts. Absolutely, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो भी तो डिससेटिस्फाइड होगा कि भाई आप जो वेजेस फाइनल कर रहे हो उसका सीधा असर तो हम पर ही आने वाला है। हमसे पूछो तो सही कि फाइनेंशियल स्टेटस क्या है कंपनी का, कितनी वेजेस अफोर्डेबल है या नहीं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स सेकेंड भी मुझे लगता है मिस्टर ठाकुर से डिससेटिस्फाइड होगा। थर्ड आता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर नॉट बीइंग कंसल्टेड ऑन द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ द वेज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द इमेज ऑफ द कंपनी। आई थिंक स्टूडेंट्स सुपरवाइजर्स के वेज कॉन्ट्रैक्ट का कंपनी की इमेज पर फर्क पड़ेगा और उससे मार्केटिंग डिपार्टमेंट पर असर पड़ेगा, इसका चांसेस तो मुझे बहुत कम लगता है। स्टूडेंट्स ये किसी भी एंगल से लॉजिकल नहीं है, तो आई थिंक मार्केटिंग डिपार्टमेंट विल हैव टू डू नथिंग विद द डिसीजन टेकन बाय मिस्टर ठाकुर। क्वालिटी कंट्रोल for not being able to give inputs to Mr. Thakur on how to improve quality of steel making process. Anyway, students, we are discussing about the supervisors and we are deciding their wages. The quality control department इसलिए dissatisfied होगा कि Mr. Thakur ने quality improvement को लेकर उनसे discussion ही नहीं किया। Actually meeting उससे related हुई नहीं है, understand? ये तो सिर्फ wages से related। तो मुझे लगता है students third and fourth Mr. Thakur से dissatisfied नहीं होगा। Personal department तो होगा ही होगा, because पर्सनल डिपार्टमेंट का ही काम है to oversee wage policies for employees and they have been ignored by Mr. Thakur. So I think students 1, 2 and 5, this becomes the best answer. Okay, so kudos to all the students who have given C as the correct answer. I see so many students still getting wrong answers. भाई जिन भी बच्चों के आंसर्स गलत हैं, you people tell me one thing, जो explanation मैंने दिया, you are satisfied with this or not? Do you agree that third option is the correct answer? एक बार चैट बॉक्स में फटाफट लिख दो yes or no, and you have all the rights to say and no. आप क्लियर कट कह सकते हो सर आई डिसएग्री विथ यू। वैसे भी स्टूडेंट्स कई सारी बातें सब्जेक्टिव होती है, तो आपका ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है। तो डू लेट मी नो इफ यू डिसएग्री। यस, चलो ऋषिकेश यू एग्री। चलो राघव तेरा भी आंसर गलत है बेटा, बी केयरफुल। ओके ऐश्वर्या, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3। Now question number 3 says the most likely premise behind Mr. Thakur's initiative regarding individualized meetings with the supervisors seems to be, okay, the most likely premise का मतलब क्या होता है? On the basis of which the decision was taken to deal with the supervisors individually. The students most likely premise. So come on, tell me which is the best answer here. I think this question is not so tough. You people can manage to give the correct answer.
Okay, Aishwarya, Shilpa, done. Come on, give the answer now. Yes, which is the best answer? The most likely premise behind Mr. Thakur's initiative. I think this question is not so tough. Coming on the first option, employee related policy should allow scope for bargaining by employees. I don't think so. This cannot be the basis of the step taken by Mr. Thakur. अच्छा, what was the step? कि मैं supervisor से directly deal करूँगा. Okay, second option. Involvement of company's president in wage problems of employees will lead to a better goodwill towards the management among the workers. Absolutely, मुझे लगता है second option में कोई problem है ही नहीं. मिस्टर ठाकुर ने यही तो सोचा होगा कि मैं खुद अगर इन्वॉल्व होऊंगा तो एक अच्छा मैसेज जाएगा कि मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड ओके अबाउट द वर्कर्स. तो एब्सोल्युटली स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 इज सेकंड ऑप्शन. चलो, अगर आपका कोई और ऑप्शन है तो प्लीज टेल मी, मैं एक बार गो थ्रू कर भी लेता हूँ. Individual agreements with supervisors would allow the management to prevent any possible collective action by the supervisors. I don't think so. उससे बेटर ऑप्शन तो सेकंड है कि नहीं, इंडिविजुअल बात करेंगे तो कलेक्टिव एक्शन नहीं होगा. अरे आप इंडिविजुअल भी बात करो, लेकिन अगर सुपरवाइजर्स डिससेटिस्फाइड हुए तो वो कलेक्टिवली तो कोई एक्शन अभी भी ले सकते हैं. अंडरस्टैंड? तो इसलिए कि कलेक्टिव एक्शन नहीं होगा इसलिए हमको इंडिविजुअली, आई डोंट थिंक सो. कमिंग ऑन स्टूडेंट्स फोर्थ, management will be able to force supervisors to accept lesser wages individually in this way. So management will be able to force supervisors to accept lesser wages. That is not the purpose. And he would be able to know who the troublemakers in the plant are by interacting with the supervisors. Not at all. The correct answer here is second option. Okay. Coming on students, which of the following managerial attributes does Mr. Thakur seem to lack the most? बताओ स्टूडेंट्स, इन पांचों में से. ओके, इन पांचों में से मिस्टर ठाकुर लैक्स इन व्हाट? ओके, सारी सिचुएशन आपके सामने है. एक तो उन्होंने इंडिविजुअली सबके साथ डिस्कशन किया, नाइट शिफ्ट के सुपरवाइजर्स को इग्नोर किया, और फिर रामलाल के साथ उनकी हाथापाई हो गई. आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स, बच्चे से बेस्ट आंसर यार, ये लैक्स इन व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन कहता है इमोशनल. सबसे पहले मैं आपके आंसर्स देख लेता हूं. कम ऑन ऑल द स्टूडेंट्स, गिव द आंसर. जितना फास्ट होगे उतना मजा आएगा. और ये सोचकर चलो कि ये जो मैं क्लास ले रहा हूं ये पर्टिकुलरली आप ही के लिए है. मतलब ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड फील लाइक यस यू आर कंपल्ड टू गिव द आंसर एंड अनिल सर इज टीचिंग टू यू पर्सनली. अंडरस्टैंड? तब जाकर आपका इन्वॉल्वमेंट और बढ़ेगा. अंडरस्टैंड? तो कम ऑन, टेक अ डिसीजन. ओके, इज इट? Okay, चलिए, students have given the answer. First option says emotional instability under pressure. देखो क्वेश्चन क्या है? He lacks in what? If I say he lacks in emotional instability, that means I mean to say that he is emotionally stable. But मुझे लगता है he is not emotionally stable because जिस तरह की घटनाएं हुई है, okay, अगर emotionally stable होता तो possibly इस लेवल तक बात नहीं बिगड़ती. अंडरस्टैंड? तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. Okay, second option, proactive problem solving. Definitely students, he does not lack in that. ये तो हमेशा से proactive था इनफैक्ट. तभी तो सुपरवाइजर्स के साथ इंडिविजुअली मीटिंग करना एंड प्रोएक्टिवली प्रॉब्लम्स को लेना. तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स, ही डज नॉट लैक इन प्रोएक्टिव डिसीजन और प्रॉब्लम सॉल्विंग. एथिकल बिहेवियर, स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. कहीं पर भी ये कहना कि ही लैक्स इन एथिकल बिहेवियर, ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं आया. अच्छा, रामलाल के साथ जो भी हुआ उसमें वी शुड नॉट फॉरगेट दैट
रामलाल की भी कुछ गलती थी, वो डायरेक्टली चला गया, ही हैड अ स्विंग एंड देन इस वजह से ठाकुर हैड टू हिट बैक दिस दैट। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स एथिकल बिहेवियर जैसा कोई क्वेश्चन मार्क मिस्टर ठाकुर के एक्शन पर फिलहाल नजर नहीं आता। फोर्थ, इमोशनल स्टेबिलिटी अंडर प्रेशर। यस एब्सोल्युटली, आई थिंक स्टूडेंट्स ये उन्हें एग्जिबिट करनी चाहिए। मान लेते हैं कि रामलाल अगर आ भी गया तो वहां पर किस तरह से उसको हैंडल किया जाना चाहिए था। तो इमोशनल स्टेबिलिटी अंडर प्रेशर ही लैक्स इन दैट। एनीवे इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, तो एनीवे ही वाज टेकिंग ऑल द डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। तो फिफ्थ तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो ही लैक्स इन इमोशनल स्टेबिलिटी। तो फोर्थ बिकम्स द बेस्ट आंसर हियर। ओके डन। चलिए वंडरफुल। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। कैट 2025 का बैच, ये अनाउंसमेंट मैं पहले भी कर चुका हूं। एंड नाउ लेट अस टेक one set of PYQ and possibly this was the PYQ of XAT 2020. But एक बहुत अच्छा सा set है. I want each and every student to understand it thoroughly. Even if we take any PYQ, you people do understand. You people do understand, एक बार अप्रोच समझ में आना चाहिए और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे PYQs को आप गो थ्रू करो। तो कुछ सेट्स मैं क्लासेस में भी ले रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम बाकी जितने भी क्वेश्चन सेट्स हैं यू पीपल कीप डूइंग ऑन योर ओन। चलिए, coming on to this question, a small data is given to us and three questions are based on it. So one is on the screen. That Rishikesh, nahi, last one was not a PYQ. The small shop selling computer peripherals is the only one of its kind in the remote village of Turturunk, जो भी नाम है इसमें स्टूडेंट्स हमें बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। ओके डन। Because online purchases take 2 weeks or more to arrive, students don't forget. Okay, ये remote village है. That is the reason. ये छोटी छोटी बातें हमेशा ध्यान में रखना. ये village है और वो भी remote village है. Okay, because online purchases take 2 weeks or more to arrive, the small shop is a quick shop for buying items such as pen drives and USB cables. Besides selling computer peripherals, the small shop also undertakes repairs of out-of-warranty products. The small shop, which earlier recorded an annual increase of approximately 12% in revenues, has been stagnating at 4% for the last 3 years, during which e-commerce sidelined brick and mortar outlets. Okay, brick and mortar का मतलब जो छोटी छोटी दुकानें होती है रोड साइड, उनकी बात हो रही है. Even the small shop is an example of brick and mortar outlet only. The students who people understand earlier recorded an annual increase of approximately 12% in revenues, has been stagnating at 4% for the last 3 years, during which e-commerce sidelined brick and mortar outlets. The shop is struggling to increase profitability. In general, the small shop has been offering a discount on MRP to compete with e-commerce prices. ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। अब पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रीजन फॉर द स्मॉल शॉप नॉट टू रिड्यूस द करेंट डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर्स। ध्यान रखना, नॉट टू रिड्यूस मतलब हम अभी भी डिस्काउंट दे रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हमें 5 ऑप्शंस में से बताना है विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन व्हाई द डिस्काउंट विच इज बीन ऑफर्ड शुड नॉट बी रिड्यूस्ड। एनीवे स्टूडेंट्स, टेल मी विच इज द बेस्ट आंसर। यस, शैलेश हैज गिवन द आंसर। हमें क्यों डिस्काउंट रिड्यूस नहीं करना चाहिए? ओके, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। Okay, Shailesh has given the answer. Rishikesh has given the answer. Come on, rest of the students. तो यहाँ पर जो बेस्ट आंसर होगा क्या होना चाहिए? Yes, please.
हमें डिस्काउंट को रिड्यूस क्यों नहीं करना चाहिए। और स्टूडेंट्स ये मत भूलो कि ई कॉमर्स एक सब्सटीट्यूट अवेलेबल है नाउ, हालांकि उसके अपने डिसएडवांटेजेस हैं एज द विलेज इज रिमोट एंड एट द सेम टाइम 4% इज द रेट ऑफ ग्रोथ फॉर द लास्ट 3 years। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ानी है। ओके, स्ट्रगलिंग टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। आप सोचो स्टूडेंट्स, अगर मैं डिस्काउंट को कम करूंगा, इफ आई रिड्यूस द डिस्काउंट, तो इसके एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हमें डिस्काउंट क्यों नहीं रिड्यूस करना चाहिए? दैट इज माई क्वेश्चन टू यू। Yes, I see so many students giving the correct answer. Indeed, the best answer here is the first option. Absolutely. Even though e-commerce offers a great range of choices, villagers prefer buying readily available products from the small shop. अब हो सकता है स्टूडेंट्स आप इसको यूं समझो कि सर वैसे भी जब विलेजर्स उसी से परचेज कर रहे हैं तो क्यों नहीं डिस्काउंट को कम करके रेवेन्यू को बढ़ा दें। यू पीपल अंडरस्टैंड, अभी जो सिचुएशन है, अगर आपने डिस्काउंट को कम किया, एक तो क्या होता है कि सो मेनी विलेजेस आर कमिंग टू यू, तो स्टूडेंट्स कम से कम एक अच्छी सेल चल रही है। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स यहाँ पर डिस्काउंट को रिड्यूस करके कुछ विलेजेस को डिमोटिवेट करना, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी डिजास्टरस। तो फर्स्ट ऑप्शन itself is a suitable option as the villagers are anyway coming, as the villagers are coming to purchase, and the discounts which we are already offering in the current scenario, discount को कम करके risk लेना, that may not be very much feasible. So students, first option seems to be okay. Coming on second, a new resident who earlier worked in the computer hardware industry is contemplating starting a business in this village. अब स्टूडेंट जो सेकेंड ऑप्शन है ना, कि हमें क्यों डिस्काउंट रिड्यूस नहीं करना चाहिए, हो सकता है कई सारे बच्चों को लगेगा कि सेकेंड ऑप्शन इज अ बेटर चॉइस, क्योंकि एक नया रेजिडेंट है जो कि स्टूडेंट्स who earlier worked in the computer hardware industry is contemplating starting a business in, but you people try to understand, यहाँ पर ये तो लिखा है is contemplating starting a business, but what kind of business, which business? क्या वो भी स्टूडेंट्स सिमिलर प्रोडक्ट्स ही सेल करेगा जो ये स्मॉल शॉप सेल करती है? अब स्टूडेंट्स आपको कंफ्यूज करने के लिए इस डेटा में लिखा क्या है कि दैट पर्सन वर्कड विद द कंप्यूटर हार्डवेयर इंडस्ट्री, इन दैट इंडस्ट्री। सो कंसिडरिंग दैट ही वर्कड इन द कंप्यूटर हार्डवेयर इंडस्ट्री, so if I just presume that कि उसका जो बिजनेस होगा वो भी इसी से रिलेटेड होगा and he will become a competitor for the small shop, I think students that is not needed. What I mean to say is, the point says that he wants to start a business, he is contemplating a business, understand, and moreover अगर वो बिजनेस स्टार्ट भी करता है तो किस चीज़ का करेगा, अभी तो वो सोच रहा है, करेगा या नहीं करेगा वो भी नहीं पता है। तो केवल ये सोचकर कि ऐसा कोई रेजिडेंट बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और कॉम्पीट कर सकता है, इसलिए मुझे अपने डिस्काउंट को रिड्यूस नहीं करना चाहिए, आई थिंक स्टूडेंट्स दैट इज नॉट नीडेड। अभी तो हमें पता भी नहीं कि वो कौन सा बिजनेस करने वाला है, अंडरस्टैंड, ओके। थर्ड, a large feeding sign prominently placed behind the shop's cash counter reads, in business and in life always be fair. स्टूडेंट्स, इससे क्या फर्क पड़ता है? ओके, अगर ऐसा कोई साइन लिखा है तो क्या उसके बेसिस पर वी विल टेक अ डिसीजन कि डिस्काउंट कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सी इज रबिश। फोर्थ, टू कवर इंश्योरेंस कॉस्ट, ई कॉमर्स हैज बिगन चार्जिंग अ डिलीवरी फी फ्रॉम लास्ट ईयर। नाउ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, अगर ई कॉमर्स कंपनी ने डिलीवरी फी चार्ज करना स्टार्ट कर भी दिया है तो डज इट मीन दैट कि आपको अपना डिस्काउंट कम कर देना चाहिए? कि एनीवे उन्होंने भी कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करना स्टार्ट किया। और वैसे भी स्टूडेंट्स देखो, अगर उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा कर भी दिया तो आई थिंक अभी आपके लिए व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज यू पीपल कैन नॉट टेक अ रिस्क। जितने विलेजेस आ रहे हैं, यू हैव टू इंश्योर दैट दीज विलेजेस कीप कमिंग टू द शॉप। वी कैन नॉट टेक अ रिस्क in the situation which is given to us. It is better to continue with the discount and not to reduce it. So students, fourth, मुझे नहीं लगता it would be a better choice. और वैसे भी students आप देखो, ई कॉमर्स से बहुत सारे विलेजर्स परचेज कर भी नहीं रहे, अंडरस्टैंड, ओके। ऐसा तो है नहीं कि ई कॉमर्स ने थोड़ी सी फी बढ़ा दी तो उसकी वजह से विलेजर्स अब पॉसिबली इसको कंसिडर करेंगे, और ये अगर डिस्काउंट कम भी करेगा तो भी विलेजर्स इसके पास आ जाएंगे। नॉट एट ऑल, विलेजर्स अभी भी इसी के पास आ रहे हैं, अंडरस्टैंड। एंड मोर ओवर ई कॉमर्स से बहुत ज़्यादा विलेजर्स परचेज करते भी नहीं है बिकॉज टाइम बहुत लगता है, इट्स अ रिमोट विलेज। फिफ्थ, रिसेंटली कस्टमर्स फ्रॉम अ नियर बाई विलेज,
have started shopping at the small shop for low-end peripherals, accounting for around 3% of the shop's total revenues. Students, अगर कुछ बाहर के विलेजर्स वाले भी या बाहर के विलेजर्स भी आ रहे हैं, but you people see that उनका contribution कितना रेवेन्यू में only 3%. तो इतने छोटे contribution को देखते हुए डिस्काउंट को कम करना possibly students that's going to be risky. If 3% revenue is coming from the outside villagers, that means major chunk is coming from the local villagers. So better has students if they are coming just to buy to avail that discount which we are offering. I think students we should keep encouraging them to come rather than discouraging by reducing the amount of discount. So students, the best answer here is indeed first option. Okay. So इस तरह से you people will have to think about each and every option. Now you people see that data बड़ा simple सा दिखता है, but ऐसे questions में गलतियां होने के पूरे chances हैं. तो एक एक option को ढंग से consider करना, उसके downside को देखना, and then to take a final call is needed. चलिए, coming on students, question number 2 now. Question number 2. The small shop wants to increase the variety of products sold, including expensive ones. However, it is averse to accumulating unsold products, specifically of the expensive kind. तो वो अपनी वैरायटी तो बढ़ाना चाहता है और एक्सपेंसिव वंस को भी रखना चाहता है, बट वो साथ में अवॉइड करना चाहता है क्या? accumulating unsold products. इसको अवॉइड भी करना चाहता है. Okay? So which of the following is the best option if the small shop wants to increase the variety of the products it sells? Without students, which of the following is the best option if the small shop wants to increase the variety of the products it sells? Come on, tell me. Question number 2. Which is the best answer? एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की स्टॉक से वो बचना भी चाहता है और वैरायटीज को बढ़ाना भी चाहता है, इंक्लूडिंग द एक्सपेंसिव वंस. तो ऐसे सिनारियो में स्टूडेंट्स उसके लिए बेस्ट डिसीजन क्या होगा? हाउ ही कैन डू दिस, दैट बिकम्स द क्वेश्चन. यस एवरीवन, क्या लगता है स्टूडेंट्स क्या आंसर होना चाहिए? ओके लक्षिका, कम ऑन rest of the students. Now this question is not so tough. अगर अपन सभी ऑप्शंस को कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा what has to be the best scenario here. And in case if you are not able to decide one particular option and if you are confused between two, do let me know. Yes, I see so many students giving the correct answer. Indeed, the best answer here happens to be the fifth option. Absolutely, fifth is correct. I'll tell you why. The small shop should make an arrangement with a retailer of the nearest city. The shop can spare one of its employees once a week to procure the weekly requirements. तो बेस्ट है, बहुत ज़्यादा स्टॉक करना ही नहीं पड़ेगा और आपकी वैराइटीज भी बढ़ जाएगी. तो स्टूडेंट्स, फिफ्थ ऑप्शन बिकम्स द बेस्ट वन. बाकी सभी ऑप्शंस एक बार पढ़ लेते हैं. The small shop should get suppliers to courier its requirements to the shop whenever needed. The suppliers require that the small shop orders a minimum quantity every month. So when you say a minimum quantity, here the fear of unsold products, accumulation of that is always there. So I think students' first option will not be a feasible solution for me. Second, the small shop should focus only on low-end peripherals that currently contribute to 60% of its revenues. The small shop should focus only on low-end peripherals that currently contribute to 60% of its revenues. क्या लगता है स्टूडेंट, सेकेंड ऑप्शन इज इट ओके? ओके, आप स्टूडेंट्स आप देखो, अभी जो कंप्यूटर पेरिफेरल्स वो बेचता है, ओके, इसके बारे में क्या लिखा है? द स्मॉल शॉप इज क्विक. एंड वैसे भी ओके, पेन ड्राइव्स, यूएसबी जो लो कॉस्ट है, ओके, जो लो एंड पेरिफेरल्स है, दैट इज Anyway, the small shop is actually selling the same. और 60% रेवेन्यू उससे आता है. बट द चैलेंज इज अब रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं अंडरस्टैंड. तो हमें कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी तो करनी पड़ेगी, वैराइटीज को बढ़ाना पड़ेगा.
तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये कहना कि अभी भी फोकस आप लो लेवल पेरिफेरल्स पर ही होना चाहिए, आई थिंक स्टूडेंट्स दैट इज नॉट a suitable option, because you people really want to increase the variety, you want to increase the profitability, you want to have the growth. Okay, the second is not a suitable option. Third, the small shop should require extra space at lower rentals available at a distance of 3 kilometers from its current location. छोटा सा तो गांव है आप स्टूडेंट्स। एक और अब देखो, यही सारे कंसल्टेंट्स होते हैं। अब मान लो किसी ने स्मॉल शॉप के ओनर को एडवाइस कर दिया कि तुम तो 3 किलोमीटर दूर एक और आउटलेट खोल लो। स्टूडेंट्स बेचारा वो न ये संभाल पाएगा न वो, एंड देयर इज अ स्मॉल विलेज। ओके, तो 2 आउटलेट करने से सेल बढ़ने वाली नहीं है, बट कॉस्ट जरूर डबल हो जाएगा। तो एनीवे, थर्ड इज नॉट करेक्ट। द स्मॉल शॉप शुड फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन हाई एंड पेरिफेरल्स which contribute to 10% of its revenue but 25% of its profits. Actually स्टूडेंट्स, रेवेन्यू का केवल 10% कंट्रीब्यूशन और केवल इसी पर फोकस करने का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये भी हो सकता है कि हमें अनसोल्ड प्रोडक्ट्स के एक्यूमुलेशन से भी बचना है। तो फोर्थ ऑप्शन अगर मैं करता हूँ, मैं अगर सिर्फ इस पर फोकस करूँ, अब सोचो स्टूडेंट्स, माना कि प्रॉफिट का 25% है और रेवेन्यू का ओनली 10%, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स इसी पर फोकस करने पर भी तो बहुत बड़ा ग्रोथ हो जाएगा, इसके चांसेस नहीं है। एंड सेकेंड, द पॉइंट हैपन्स टू बी द फियर ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट्स इज ऑलवेज देयर। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स बेस्ट है फिफ्थ में, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, रिस्क भी कम है और जो आप चाहते हो वो हो भी जाएगा। ओके, तो बेस्ट आंसर हियर इज फिफ्थ ऑप्शन। चलिए, कमिंग ऑन स्टूडेंट्स, द थर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम डेटा। किसी स्टूडेंट ने पूछा व्हाई नॉट ए पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बिकॉज ए में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि दैट सप्लायर वांट्स मिनिमम क्वांटिटी एवरी मंथ, बट उसमें रिस्क क्या है, accumulating unsold products. Therefore, A is not a suitable option. Coming on the third one. Yes, now there is a franchisee proposal which is there with the small shop. An emerging brand offers a franchise to the small shop for repairing its products on a condition that other brands are not to be repaired. Repairs currently account for 15% of its revenues. So which of the following if true will best help the small shop to decide on the franchise? So when I say decide on the franchise, that means to take the franchise. तो फाइनली स्टूडेंट्स, अगर वो डिसाइड करता है कि मुझे फ्रेंचाइज लेना है, ओके, तो 5 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इज बेस्ट सूटेबल टू गाइड हिम और टू हेल्प हिम और टू मोटिवेट हिम टू टेक ऑन दी फ्रेंचाइज? तो बताओ स्टूडेंट्स, कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा यहाँ पर? Okay. Shall I'll tell you which is the correct answer here. Students, see, if I take the first option, revenues from repairs are expected to increase by about 3 to 5% annually. इसका सीधा सा मतलब है रिपेयर्स को सीरियसली तो लेना ही चाहिए। अभी 15% ऑफ द रेवेन्यू है और 3 to 5% एनुअली बढ़ने वाला है। एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो सी दैट इट इज एन इमर्जिंग ब्रांड। तो पॉसिबली स्टूडेंट्स, आने वाले दिनों में जब रिपेयर्स का मार्केट और बढ़ेगा तो यस, इफ वी टेक अ फ्रेंचाइज उसका बेनिफिट मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन कहीं ना कहीं फ्रेंचाइज लेने के फेवर में okay है, and this gives the logic for that only. Coming on the second option, for the first 3 years the emerging brand has offered to pay a fixed amount equal to the revenues earned from repairs the previous year. You people try to understand, whenever you people take such decisions,
the decisions should be taken keeping a subsequent or a sufficient long term in mind. What I mean to say is the decision should not be taken just on the short term basis. कि चलो भाई 3 साल का जो revenue है, that company is anyway paying, so we should take it. Possibly students, we will have to think about the future. And students, अगर long term अपना decision होता है, और मैं जब भी कहता हूँ balanced approach, हमें बहुत ज़्यादा immediate decision भी नहीं लेना है, और ना ही students long term को ignore करना है. But as a decision, franchise लेना, that's going to be that's going to have a long-term impact on the small shop. So that decision has to be taken considering that also. तो मुझे लगता है students second option should not be a better option because 3 साल के लिए वो पेमेंट कर भी दे, so what? पर उसके बाद अगर students कोई major loss हुआ, who is going to bear it? तो इसीलिए students second option is not the suitable option, though it seems to be okay. Coming on the third one, no big and reputed brand has shown any interest in franchising the small shop. That is not at all a logical answer. किसी और ने इंटरेस्ट शो नहीं किया, इसीलिए मुझे ये फ्रेंचाइजी ले लेनी चाहिए. That is not a logical way to decide on the franchise. So C cannot be the correct answer. Coming on the fourth option, the upcoming brand is very new and needs franchisees desperately. अब सोचो स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो उस ब्रांड को फ्रेंचाइजी की ज़्यादा ज़रूरत है रादर दैन द स्मॉल शॉप. बट हमें तो स्मॉल शॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि अगर वो फ्रेंचाइज लेता है तो उसका बेनिफिट क्या है. तो इसलिए स्टूडेंट्स फोर्थ ऑप्शन इज नॉट द करेक्ट आंसर. नो वेयर द फोर्थ ऑप्शन इज टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस विच द स्मॉल शॉप इज गोइंग टू गेट. फिफ्थ वन, द स्मॉल शॉप will have to send 2 of its employees for a 3-month training. If it wishes to be a franchisee, the emerging brand will bear the training cost. अब देखो स्टूडेंट्स, द स्मॉल शॉप विल हैव टू सेंड 2 of its employees for a 3-month training. If it wishes to be a franchisee, the emerging brand will bear the training cost. अब सोचो स्टूडेंट्स, अगेन ये जो डिसीजन होगा ना, ये शॉर्ट टर्म होगा. हमें स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म सोचना है. एंड रिपेयरिंग का जो फील्ड है वो 3 to 5% हर साल बढ़ने वाला है. तो अगर रिपेयरिंग जो कि बहुत अच्छा अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है टू द रेवेन्यू ऑल्सो, आई थिंक स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन इज अ बेटर चॉइस, जो कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगा दैट वी शुड गो फॉर दिस फ्रेंचाइज. स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर हियर. चलिए, आई वांट यू पीपल टू गिव योर टेक ऑन दिस. You people just mention in the chat box whether you agree with first option or not. Okay, I see so many students giving first option as the correct answer. ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया. तो चलिए स्टूडेंट्स, वैसे मैं चाहता था कि एक सेट और ले लूं, बट इसको अपन कल कवर करेंगे. और अभी हमने 2 सेट्स आज जो डिस्कस किए, इन दोनों सेट्स में स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है हर ऑप्शन को कवर करने का अप्रोच. ओके, वो जितनी अच्छी तरह से, एंड वी पीपल हैव डिस्कस्ड ऑल दी ऑप्शंस. I did not just give the correct answer. We people have seen if an answer is not correct, what is the reason for that also. Chaliye, before we end our class, if you people have got any question, okay, I'm just waiting for your questions. Any question pertaining to anything, pertaining to the admission process, form filling process, that को लेकर, decision making को लेकर, whatever. So 1 minute, we are going to have an open house and then we are going to end the session. यार ऋषिकेश, VLR भी हम कवर कर रहे हैं. कल वाली जो क्लास थी वो VLR की थी, और वापस कल जो क्लास होने वाली है वो VLR की होगी. ओके, तो कल वाली क्लास आप अटेंड करना. ओके, उस वीडियो को एक बार गो थ्रू भी कर लो. कल वाली जो क्लास थी, जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो एज वेल. ओके, एंड देयर आर मेनी मोर सेशंस व्हिच वी हैव टेकन. स्नैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो सेशंस मैंने लिए हैं, उसमें भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस हैं जो ZAT के लिए दे विल बी इंपॉर्टेंट. और VLR को लेकर ऑल द स्टूडेंट्स, रीडिंग हैज टू बी गुड, ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड मोर ओवर जंबल पैराग्राफ्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं. ओके, तो यू पीपल कैन हैंडल इट वेरी वेल. सर, इज मॉक नेसेसरी फॉर ZAT और PYQ एंड वीडियोस आर फाइन? मॉक तो बेटा देना ही चाहिए. कोई भी स्टूडेंट ZAT अगर वो दे रहा है, मॉक्स बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, बिकॉज ZAT इज अ लेंथी पेपर. एंड जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली स्नैप दिया है, उन सबकी हैबिट क्या है कि सर 1 आवर का टेस्ट देने की. अब एक साथ 3 घंटे बैठना फॉर ZAT इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर द स्टूडेंट्स. सो माय सजेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स, कम से कम 3 मॉक ZAT हमें देने चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स वो पेशेंस डेवलप हो सके कि मैं 3 घंटे तक बैठकर आपके ZAT अटेम्प्ट करूं. तो इसीलिए मॉक्स का सब्सटीट्यूट कुछ नहीं है. साथ में PYQ जरूर कर लो.
so that you genuinely understand कि XAT का पेपर कैसा होता है. तो 2020 से लेकर 24 तक के PYQs 5 PYQs अच्छी तरह से गो थ्रू कर ही लेने चाहिए. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. XAT कॉलेजेस का लास्ट डेट क्या है सर? देखो, XAT अलाइड कॉलेजेस की लास्ट डेट्स बहुत अलग अलग हैं, नो डाउट. सबसे प्रीमियम तो वैसे भी XLRI के जो मल्टीपल कैंपसेस हैं, देन यू हैव XIUM भुवनेश्वर एंड ऑलमोस्ट ऑल द कॉलेजेस, all the top B schools of India except the IIMs, they also take the scores of XAT as well. Almost, not all but almost. इन सब की लास्ट डेट अलग अलग है. तो एनीवे मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो यू विल कम टू नो व्हाट द लास्ट डेट्स आर. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? डन. चलिए, तो फाइनली स्टूडेंट्स, वन मोर क्वेश्चन इज देयर. XLRI जमशेदपुर एंड XLRI दिल्ली का कट ऑफ, एंड इज देयर एनी कैटेगरी कट ऑफ? बिल्कुल, इसमें कैटेगरी कट ऑफ भी होता है. एंड अगर मैं जनरल बता दूं तो देखो, एक्चुअली 95 परसेंटाइल आप तो ये लेकर चलो कि जैसे 75 क्वेश्चंस का पेपर है, 75 में कीप अ टारगेट कि आपका स्कोर 32 क्रॉस हो जाए. अगर 32 क्रॉस होता है तो स्टूडेंट्स पूरे चांसेस हैं कि यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम XLRI, ओके, द मेन कैंपस एज वेल एज द दिल्ली कैंपस. बाकी इसके कट ऑफ को लेकर भी एक सेपरेट वीडियो आई विल पोस्ट इट. ओके, चलिए, सो ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. इट वाज अ फैंटास्टिक journey, a fantastic session, and the kind of response which you people were giving was truly great. So see you tomorrow at 1 p.m. with some newer questions based on VALR. Thank you very much.